So the first topic for today is duty of care. Okay, see, एक छोटा सा डायग्राम है ड्यूटी ऑफ केयर के लिए. ये बहुत ही कॉमन सा इमेज है जो आपको बहुत जगह पे दिख जाता होगा. So this is a very familiar image. So this is the definition of duty of care. So you already know my teaching style, right? I already focus on important keywords and lines which are important for exam, from which questions can be asked. So duty of care. See, there are two things here. Number one is duty and number two is care. So duty you already know, right? किसी काम को करना है, आपको किसी ने बोला तो ये आपकी ड्यूटी हो जाती है, कर्तव्य. हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य. Okay, so duty of what does this duty of care means? A duty of care is a legal obligation. First of all, a duty of care is a legal obligation, important word, that is imposed on an individual, requiring adherence to standard of reasonable care while performing any act that could be forcibly harm others. Clear? अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है, हिंदी में मैं आपको सिंपल से समझाता हूं. What is duty of care? ड्यूटी ऑफ केयर कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप अपने फंक्शंस को इस तरह से परफॉर्म करेंगे कि दूसरों को उससे नुकसान ना हो. राइट? यू ऑल पीपल आर वर्किंग इन द माइंड, लाइक यू देयर आर अदर पीपल वर्किंग इन द माइंड. सो आपकी एक्सपेक्टेशन, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? आपकी एक्सपेक्टेशंस यही होगी ना कि आपकी किसी दूसरे की गलती से आपको कोई हार्म ना हो. And the same expectation will be of other person also, that your actions do not harm others. So ये जो एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है जिसमें हर आदमी को अपने फंक्शंस को बहुत ही डिलीजेंटली करना है ताकि दूसरों को हार्म ना हो, that is called duty of care. ठीक है? It is the first element that must be established to proceed with an action in negligence. सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, इट इज द लीगल ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर सो दैट अदर्स आर नॉट हार्म्ड. आपको अपने काम को इस तरीके से करना है कि दूसरे लोगों को आपके काम से हार्म ना हो. एंड ऑफ कोर्स इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. मतलब ऐसा ना हो, एम्प्लॉयर, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑल्सो to safeguard the interest of employees, and at the same time it is the responsibility of employees also to safeguard the interest of employer as well as the employer, as well as the means दूसरे लोगों का एम्प्लॉयर के प्रति भी और आपके साथ जो काम कर रहे उसके लिए, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि कहीं किसी का भी हार्म ना हो. राइट? I've already shown you the image. This is the duty of care in which you try to care for all the people who are working with you. Right? This is the example of duty of care. अगर आप इसको example के साथ समझे, because it is always important to understand the topic with examples, because it creates photographic memory in your mind, और वो आपका जो याद रखने का जो power होता है, that increases. Right? So these are the examples of duty of care. You can see what I have shown here. These are duty of care. A medical practitioner to a patient. एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट उसके पास आए उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट करे. ए हॉस्पिटल टू ए पेशेंट, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट्स हो ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो. अ ड्राइवर टू अनदर ड्राइवर. लिसन, अगर फॉर एग्जांपल ऑन ए हॉल रोड two dumpers are driving in different direction, अगर दोनों कोलाइड कर जाते हैं तो ऑफ कोर्स दोनों को नुकसान होगा. सो दोनों ही ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने लेन में चले एंड किसी भी तरह के कोलिजन को या किसी तरह का एक्सीडेंट को वो अवॉइड करे. ओके, एन एम्प्लॉय टू अनदर एम्प्लॉय, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को लेकर के है. एन एम्प्लॉय टू ए वर्कर, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया. एंड अ लैंडलॉर्ड टू अ टेनेंट, दैट इज अनदर एग्जांपल. ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ड्यूटी ऑफ केयर. So that was point number one, topic number one. Come to the second topic, occupational hazard of mining. Right? So this, you are familiar with this image. I have already shown this image in the previous classes. Right? So what is the difference between hazard and risk? You can easily understand. And मुझे पता है कि आपको
हजार्ड और रिस्क का अब तो डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होता होगा, राइट? सो हजार्ड एंड रिस्क, hazards are something that can potentially cause harm. मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए ये डॉल्फिन या शार्क अगर वाटर में है, so that is a source of hazard, कि अगर कोई जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ये शार्क या डॉल्फिन जो है कर सकता है. ओके, सो इसका मतलब when you talk about occupational hazards of mining, so there are something which is inherently present in mining and that can potentially cause harm. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल, you are suppose you are crossing the road. Okay, so you have hazard from dumpers, right? Suppose you are working in the underground mines, then you have lots of hazard, like there may be roof fall, there may be some accident, कुछ water ingress हो सकता है, gas explosion हो सकता है, lot of things are there. Okay, so those are called hazard. So what is occupational hazard in mining? All those hazards which are present in mining, that is called occupational hazard of mining. Occupation word क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये mining के occupation के साथ inherently attached है. That is why occupational hazard of mining. And when you see the vision of DGMS, it is already written that to attain risk and hazard free condition. So इसका मतलब occupational hazard of mining is so important that it is included in the vision of such an important organization of DGMS. Okay, so this is the vision of DGMS. An occupational hazard is a hazard that is experienced in workplaces. I have already told you कि किसी भी काम में जो inherently कोई hazard associated है, that those are called occupational hazards. And there, of course, बहुत सारे hazard हो सकते हैं. Like there may be chemical hazards, there may be biological hazards, there may be physical hazards, and there may be psychosocial hazards also. Chemical hazards, किसी chemical से कोई problem हो गई, accident हो गया. Biological hazards, if some accident occurs due to say virus, due to say like कुछ dirt है, कुछ गंदगी है इधर उधर, कोई बीमारी फैल गई, तो those are biological hazards. Physical hazards, आपको किसी चीज से चोट लग गया, कोई इंजरी हो गई, then those are physical hazards. And psychosocial hazards कहने का मतलब ये होता है कि जो साइकिक, मतलब जो ऐसा सामने दिखता नहीं है लेकिन वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखा है. this is an additional information. So these are psychosocial hazard. For example, there may be emotional hazard, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, verbal hazard, sexual harassment may be there, violence at work. Then all these things are psychosocial hazard. आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, but फिर भी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, this is additional information and you can skip this. Okay, so these are the hazards, occupational hazards, which are associated in the mining. Okay, listen, I have made some nomenclature here. L1, Q1, what does this mean? That this is lecture 1, and for that lecture 1, this is question number 1. Okay, so this is the nomenclature of all these questions. So this is the question, and attempt this question. What is the generic obligation of owner to maintain safety in mines? To discuss with the contractor, to deploy contractor workers, to deploy competent staff and employees, to deploy heavy machinery, and none of the above. Okay, so answer this. Okay, a lot of people are answering. Most of them are correct. Someone has answered E. None of the option. Why? I cannot understand that. All right. Okay, great. Very good. So most of you have answered C, and that C is the correct answer. So this is the generic obligation. See, there are two words, generic and specific. For example, मैं आपको बताता हूँ. अगर किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, आपने बोला मैं मार्केट जा रहा हूँ. So that is very generic in nature, कि आप मार्केट जा रहे हो. But suppose someone asks you, where are you going? And you tell them that I am going to Big Bazaar Mall of that locality. So you are very specific. Okay, so these are two words, generic and specific. So this question is regarding generic obligation of owner. So generic obligation of owner is to deploy competent staff and employees in the mines such that maximum productivity and safety can be ensured, right? This is again the second question regarding to this topic only. What are the unsafe working conditions at mines?
choose from the following: defective tools or equipments, congestion in the workplaces, narrow roads, improper method of working, and poor housekeeping, and all of the above. Well done. Some few people have answered A, which is of course not correct, because answer is E. And this is very simple. Like I have already told you in management classes also, that if you get some options like all of the above, then you have almost 70 to 80% chances of being correct if you tick all of the above. Okay, तो अगर आपको नहीं भी आता है किसी क्वेश्चन में, आप ऑल ऑफ द अबव को अगर टिक करते हो 10 क्वेश्चन में, डेफिनेटली आपका 8 क्वेश्चन. Okay, most of the people have answered E, and that is the correct answer also. Now this is the third question related to occupational health and safety also. Which among the following is not an objective of occupational health and safety? Development of healthy work environment, development of human resources for occupational health, providing pick-up and drop facilities for employees, development of collaboration in occupational health and with other activities and services. Option 1, 2, and 3. Okay, so tell me what is the answer. And see, these are very easy questions. अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो आप देखो कि कितना आसान क्वेश्चन ये सब, आपको बस पढ़ने की जरूरत है. Okay, so again most of the people are answering C, and that is the correct answer for this question. Okay, pick up and drop facilities for employees. आप देखो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, like कितना आसान सा ये ऑप्शन बनाया हुआ है कि ये 3-4 लाइंस है, और 4 लाइन में ये लाइन कितना अलग सा लाइन. Okay, so answer is of course C, and this question was again very easy. All right, so come to the next topic for today, and that topic is safety and health management system. Safety and health management system. देखो मैंने फिर से आपको बताया था कि आप ना पहले टॉपिक पढ़ने के पहले you just concentrate on the heading safety and health management system. See, you already know the definition of management. जब भी आपको last time भी मैंने बताया था, when it comes with material, then it is called material management. मतलब you have to manage the material. Okay, those who are not able to listen me, please connect your audio. आपको अगर आवाज नहीं जा रहा है ना, तो आपके साइड में माइक दिख रहा होगा, उस माइक को आप क्लिक करेंगे, फिर कनेक्ट करेंगे तो आवाज आ जाएगा. Please connect to audio. All right. So it is safety and health management system. A work safety and health management system is, what is this? An organized system for work health and safety management in the workplaces. As such, it is a framework that allows the management to put in place a complete system of protection. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारी चीजें लिखी है, जितना आसान से आसान हो सकता है. It aims to utilize the strength of managers, supervisors, and other employees. So this is very important, that again in this thing, managers, supervisors, and employees, means employer and employees both are associated. Okay, so जो भी system in place है to ensure safety and good health of people, either employer or employees, उसको हम लोग बोलते हैं safety and health management system. Okay, this is again a very small diagram, and you can see here, this is the person. It may be either employee or employer. All those things, muffles are there, fire extinguishers are there, helmets are there, first aid kit is there, and of course other things are there. So all those things are included in safety and health management system. बहुत ही आसान सा टॉपिक है, नाम से ही क्लियर है. Okay, these are 8 things which are included in safety and health management system. Emergency response planning, incident reporting and investigation, hazard identification, worker competence training, administration, commitments and policies, inspections, hazard and risk control. देखो आपको ये सारी चीजें ना याद करने की एकदम भी जरूरत नहीं. You need not to remember all those things. If you understand
what this word tells you, safety and health management system. आपको मैंने पहले ही बताया ना कि सब कुछ याद करने के लिए और पढ़ने के लिए नहीं होता है. There are things which are written to make you understand, but if you understand the heading itself, all those things are not required, but still I would suggest you to read these ones ताकि आपका काम हो जाए. Right? Okay. So this is again फिर से आप पढ़ लीजिए. If you have not read it well, फिर से आप पढ़ लीजिए. Then again, this is the question which have been asked by DGMS. Which of the following is a characteristics of an effective safety and health management system? मैंने आपको अभी क्या बताया था लास्ट टाइम में, देखो. I have told you one important word here ना कि all employees and employers both are attached. So please remember all those things. These are very small points, लेकिन इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. So which of the following is a characteristics of an effective safety and health management system? Most employees are not involved. Safety and health issues are factored in all aspects of company operation. Once an SHMS implementation plan is developed, no changes should be allowed. No corrective action is taken after periodic system reviews and audits. None of these points. अगर आप सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो ना, you will be able to answer this question. Okay, a lot of people are answering B. अभी मैं आपको समझाऊंगा इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है. आंसर इज ऑफ कोर्स बी. पहले आप टाइप कर लीजिए. गुड गुड. इट्स एक्सीलेंट टू सी दैट लॉट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट. सी देखो, मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस का ना सॉल्व करने का तरीका बताता हूं. सेफ्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? अब ये बताओ, मैनेजमेंट का डेफिनेशन यू ऑलरेडी नो. व्हाट इज मैनेजमेंट? ऑल पीपल आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट. अब पढ़ो इस क्वेश्चन के ना टेक्स्ट को पढ़ो. अब you will be easily able to eliminate the wrong options. Most employees are not involved. ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व ना किया जाए? नेवर. Once an SHM is implemented, no changes should be allowed. क्या ऐसा कोई भी सिस्टम पॉसिबल है? Changes are allowed even in act, even in regulation, even in rules. कहाँ changes required नहीं है? आप ये बताओ. This world is dynamic. Everything keeps changing. So of course your policies, your decisions also changes with time. So ये statement तो कभी हो ही नहीं सकता. No corrective action is taken after periodic system review and audit. तो फिर कर क्यों रहे जब corrective action ही नहीं लेना है? मतलब कि अगर हमने गलती देख ली और गलती को वैसे ही छोड़ दिया, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? Is it possible? Never. So ये तीन ऑप्शन तो आप ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. That is why answer is of course B. Okay, you just give some time to read the question and I tell you कि आप 10 में से 10 सही करोगे. Okay, so again the next topic हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर से वापस रिवाइज कर लेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट बहुत ही सिंपल से टॉपिक है. यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट दैट. देयर आर माइनर एक्सीडेंट, देयर आर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, देयर आर सीरियस एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, डिजास्टर. आपको माइनर का डेफिनेशन पता है, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन एक्ट. रिपोर्टेबल, दैट इज ऑलरेडी रिटन इन एक्ट. Serious, that is already written in act, that there is permanent loss to a part of the body. Fatal, when 1 to 3 deaths take place, it is called fatal. When 4 to 9 deaths takes place, that is called a major accident. And when there are more than 10 deaths, then that is called disaster. Okay, that is called disaster. So these are the basic definition. I am sure you all people are aware with this definition, so nothing much in this. Of course, come to the next question. So this question have again been asked by the DGMS. The accident which results in death of one or more persons is known as fatal accident, serious accident, dangerous occurrences, reportable accidents, and none of the above. देखो, और आप सुनो, you just listen. These are the questions which have asked by DGMS. मैंने अपने मन से नहीं बनाए ये सारे क्वेश्चन. और आप देखो कि कितने इजी, और ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. If you are thinking like we are discussing only simple questions, then you are absolutely wrong. हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको दिख जाएगा कि हर क्वेश्चन कितना आसान.
Okay, so answer is A. I am not picking and choosing the easy questions. I am discussing all the questions which have been asked. So these are the questions which are actually asked in the exam. Answer is of course E, and most of you people have answered it E. So well done. And this is again question number 6. The accident will be termed as a major accident if it involves loss of more than 10 lives. None of the options, देखो DGMS नहीं ऐसा option set करते ऊपर करते हैं. 2 or more lives, more than 3 but less than 10 lives, more than 2 but less than 5 lives. Major accident का definition क्या है? I've already told you there. A तो आंसर हो नहीं सकता, किसी ने A लिखा. More than 10 lives के लिए भी मैंने बताया कि disaster, that is disaster. Okay, so of course, right, 4 to 9 people. So that is more than 3 but less than 10 lives. And of course, answer is B. Again, very easy questions. These have all been asked by DGMS in the exam. और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं. ओके, ऑलराइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंसी रेट एंड सिविरिटी रेट. फ्रीक्वेंसी रेट एंड सिविरिटी रेट. सबसे पहले ना मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी रेट और सिविरिटी रेट निकाला क्यों जाता है. सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो लोगों की यही होती है. देखो, फ्रीक्वेंसी रेट एंड सिविरिटी रेट रिफ्लेक्ट्स कि एक्सीडेंट को लेकर के उस माइंस की पास्ट हिस्ट्री कैसी है और आगे कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं. ओके, सो 2 things are important. Number 1 is history and number 2 is likelihood related to accident. Okay, so frequency and severity rate को निकाला जाता है कि उस माइंस पे कितने एक्सीडेंट ऑलरेडी हुए हैं और कितना लाइकलीहुड है कि फिर से वापस एक्सीडेंट हो जाए. ऑलराइट, डेथ रेट एंड इंजरी रेट इज नॉर्मली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स. 3 अलग अलग वेरिएबल्स है जिसके आधार पे वी कैलकुलेट डेथ रेट एंड इंजुरी रेट. सो व्हाट आर दोस 3 वेरिएबल्स? फर्स्ट इज पर 1000 पर्सन्स एम्प्लॉयड. याद कर लीजिए अभी ही, वापस इसको दोबारा नहीं याद कर पढ़ना है. नंबर 1 पर 1000 पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब पर 1000 पर्सन एम्प्लॉयड में कितने लोग कितने हो जाते. पर लाख मैन शिफ्ट वर्क, 1 लाख मैन शिफ्ट आदमी अगर काम करता है तो कितने लोगों का डेथ होता है या इंजरी होता है. Per million ton of coal or ore produced. Okay, so these are the 3 variables on which frequency rate and severity rate are calculated. Frequency rate and severity rate reflects history and accident likelihood in the mines. All right, so these are the 3 variables and frequency rate can be calculated separately. अभी मैंने क्या बताया आपको कि एक्सीडेंट भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं ना. There are fatal accidents, there are serious accidents, there are repeatable accidents, there are disasters, there are major accidents. Okay, so all these terms, frequency rate and severity rate, can be calculated separately for fatal accident. कि fatal accident को लेकर के उस माइंस का हिस्ट्री क्या है, कितना एक्सीडेंट आगे हो सकता है. serious accident को लेकर के what is the history and what is the likelihood of accident in that mine, and then for repeatable injuries what are the history and accident likelihood for that mine. That mine, I am always telling you, that mine means these numbers, frequency and severity rate, are calculated for individual mines. Okay, किसी कंपनी के लिए भी आप निकाल सकते हो, that is absolutely possible, but for mines it is calculated for individual mines. All right, this is again the question which have been asked in DGMS. Accident frequency rate is calculated in terms of persons employed, 100, 1000, 10,000, 1 lakh, none of the options. ओके, और यही सारे टॉपिक्स है जिससे वापस क्वेश्चन पूछा जाएगा. कुछ भी नया नहीं पूछा जाएगा, वापस इन्हीं सारे टॉपिक से लैंग्वेज चेंज करेंगे, डाटा चेंज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे. Alright, so answer is of course B. So that was again very easy question. Alright, this is again a question.
Okay, so this is the next question. Question number 8. Accident frequency rate is calculated in terms of this much man shift worked. 100, 10,000, 1,000, 1 lakh, all of them. Okay, you can take time. आराम से आंसर कीजिए. मैं 1 मिनट तो कम से कम स्क्रीन पे रुकता ही हूँ. But you can see how easy questions have been asked by DGMS. और अगर आप, if you are not calm and composed in the exam, आप इन easy questions को भी गलत कर सकते हैं. So that is why there is one sincere suggestion to all of you that when you attempt the question, be always very calm and composed. Questions कभी difficult नहीं पूछा जाता है. Always remember that. कभी question difficult नहीं पूछा जाता है. Okay, answer is D. Per lakh man-shift work, per million ton of coal or ore produced के ऊपर अभी तक DGMS ने question नहीं पूछा है. So that question can be repeated. So DGMS can ask question regarding what is the amount of coal or ore worked upon which accident frequency is calculated. So that will be 1 million, right? I have already told you there. So frequency rate and severity rate, these are the formula. These are very basic formula, very easy formula. Frequency rate for fatal injury is equal to number of fatal injuries divided by average daily employment in 2000. Okay, 2 बार 3 बार आप इसको देखेंगे, 2 बार 3 बार आप कॉपी में इसे लिखेंगे. It will be very easy for you to remember this formula. Frequency rate for fatal injuries is equal to number of fatal injuries divided by average daily employment in 2000. Frequency rate for serious, अब बस इसी fatal injuries को I have written serious injuries and reportable injuries. So nothing have changed. Fatal injuries, serious injuries and reportable injuries. आप देख सकते हो कि this is just one formula, not 3 formula. ये सिर्फ एक फॉर्मूला है और ये अलग अलग फैटल इंजरी के लिए, सीरियस इंजरी के लिए एंड रिपोर्टेबल इंजरी के लिए कैलकुलेट किया गया है. ओके, सो दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला एंड इट हैज बीन डिराइव्ड फॉर 3 different kind of accidents. So it looks like there are 3 formula, but actually this is one. Okay, very easy one, not a difficult one. So I have already told you there, na? I have already told you in this slide that we can calculate based on 3 parameters. Already solved 2 questions also. Per 1,000 person employed, per man-shift work, per lakh man-shift work and per million ton of coal produced. बताया था ना आपको. So that is why फॉर्मूला हमारे भी 3 तरीके के फॉर्मूला आएंगे, right? On the basis of man-shift work. So I have already told you that it is calculated on the basis of per lakh man-shift work. So the formula is again same, number of injuries by total man-shift work into 1 lakh. Please focus here. 1 lakh is 10 to the power 5, not 6. ये मैंने अभी I was just checking all the content available and I have seen that lots of people, lots of books, in lots of study material, this is written as 10 to the power 6. That is wrong. 10 to the power 5, not 10 to the power 6. Okay, because it is 1 lakh per lakh man-shift work and per lakh man-shift work is 10 to the power 5, not 10 to the power 6. Right? बहुत जगह पे गलत लिखा हुआ है. So please be aware. On the basis of coal or ore produced, I have already told you that the number here is per million. So per million is 10 to the power 6. Right? So don't confuse between 10 to the power 5 and 10 to the power 6. If that is regarding per lakh, then that is 10 to the power 5. If that is regarding per million, then that is 10 to the power 6. Right? कोई confusion नहीं है. Per lakh मतलब 10 के पावर 5 होता है. Per million मतलब 10 के पावर 6 होता है. Okay, so that was regarding frequency rate. Now this is regarding severity index या severity rate, कुछ भी बोल सकते हो आप. यहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे यहाँ पे भी लोगों ने 10 to the power 6 लिख रखा है. 10 to the power 6 नहीं होगा. Please repeat. Okay, what I am telling you. Okay, let me go again. थोड़ा पीछे जाने दीजिए मुझे. मैंने बोला कि 3 चीजों के आधार पे हम लोग इनको कैलकुलेट करते हैं. पहला होता है पर 1000 पर्सन इन्वॉल्व एम्प्लॉयड, दूसरा होता है पर लाख मैनशिप वर्क और तीसरा होता है मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस. अगर आप पर 1000 की बात करो सो दिस इज 10 to the power 3, आपको पता है. पर लाख की बात करो सो दिस इज 10 to the power 5, यू ऑलरेडी नो दैट. एंड व्हेन पर मिलियन की बात करो तो दिस इज 10 to the power 6, राइट? तो मैं इसी के बारे में आपको बता रहा था. प्लीज क्लियर. वॉइस इज क्रैकिंग. I think is my voice audible to everyone? Clear?
और इज इट रियली क्रैकिंग? क्योंकि ये हो सकता है कि आपके इंटरनेट स्पीड का भी प्रॉब्लम हो सकता है. हाँ देख, यस राइट, सो यस, ओके, सो राइट राइट राइट, सो प्लीज आप इंटरनेट का इशू, थोड़ा मौसम खराब तो है, सो देयर मे बी सम इशूज, बट आई थिंक माय वॉइस इज क्लियर. नो सर, योर वॉइस इज क्रैकिंग अगेन एंड अगेन. ओके, so for that what should I do, because I'm already connected with good speed Wi-Fi, so voice is cracking. All right, there may be some, see, there may be some internet, like network interruption. We cannot do much about this because मेरे मतलब जो Wi-Fi है, that is also like a very high speed Wi-Fi. Okay, okay, right, right, right. Thank you, thank you. So continue. Let's continue. So I told you that we are talking about three things: per 1,000% employed, per lakh months of work, and per million ton of coal produced. मैंने आपको बता दिया 1,000 मतलब 10 पर 3 होता है, lakh मतलब 10 पर 5 होता है, और million मतलब 10 पर 6 होता है, right? So अभी हम severity index के ऊपर आ चुके थे. Severity index तो आपको कंफ्यूज, मैनसिफ्ट वर्क कितना होता है? मैनसिफ्ट वर्क बहुत सारे बुक्स में गलत लिखा हुआ है, बट आंसर इज 10/5 नॉट 10/6. सो सिविलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 50. दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला. ओके, कोई इसको किसी चीज से डिराइव नहीं किया गया है. व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जहां पे डाटा पहले आ जाता है, और जब उस डाटा को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो जो फार्मूला निकल के आता है, जो मैक्सिमम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, that is called empirical formula. Okay, so this severity index formula 50F plus S divided by massive work into 10/5 is an empirical formula. मतलब डाटा बहुत सारे माइंस का लाया गया, उसको कोरिलेट किया गया, और इस फॉर्मूला को सबसे फिट तरीके से उन सारे डाटा को किया गया, तो इसलिए ये एक empirical formula है. What is F? F is number of fatal cases. What is S? S is number of serious bodily injury cases. Okay, please focus here. These are number of cases, not number of person dead. मतलब कि अगर 5 टोटल केस हुआ है, so we shall take F is equal to 5. और उस 5 केस में अगर मान लो कि 10 लोग का डेथ हुआ है, we cannot take 10 because F is number of fatal cases. I again repeat, cases, not number of persons who has been died. Number of serious cases, number of reported cases, and these are the formula. आप 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे, कोई बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है. कॉपी पे 3 बार 4 बार 5 बार उसको रिपीट करना into 10/5. 1 fatality is equal to 50 serious injuries, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ. ये माना जाता है empirically इस बात को माना जाता है कि 1 fatality is equal to 50 serious bodily injuries. That is why it is written as 50F. Then again severity index, total man hours of work exposure. अभी मैं सारे क्वेश्चन देख रहा हूँ, प्लीज थोड़ा समझ लीजिए. मैं आप total, see there are two things here, man shift and man hours. Okay, अभी किसी ने पूछा था कि what is the meaning of man shift? I'll explain. What is the meaning of man hours? I'll explain. Okay, so when it is man hours 10/6, when it is man shift 10/5, again it is for दो बार बहुत क्लियर होता है. Okay, if one person worked in one shift, then that will be called one man shift. If 100% worked in one shift, then man shift will be equal to 100 because 100 persons have worked in that shift. Suppose in a day there are 3 shifts. Okay, and average 100% works in one shift. What will be the total number of man shift? 100% works in one shift, and there are 3 shifts. So total man shift will be equal to 300. Total man shift will be equal to 300. कि एक आदमी शिफ्ट में काम कर रहा है तो उसको एक मैन शिफ्ट बोलेंगे. 100 आदमी में काम कर रहा है 100 मैन शिफ्ट बोलेंगे. अगर 100 आदमी अलग अलग में कर रहे हैं, आदमी एक में काम कर रहे हैं, that will equal to 8, right? I am there are sound problems. See, there are weather problem here and my internet is working fine,
So what should I do? All right, I'll keep repeating. Okay, so if my voice breaks, then I'll keep repeating. Repeat. Right. So I am telling you the difference between Mansfield and बोला है ना. Just read the word twice, thrice, 4 times, and you will man or shift से. An hours आदमी अगर एक शिफ्ट में एक दिन काम करता है, so man shift will be equal to 1. एक आदमी एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करता है, so man hours will be equal to 8. Right? So man shift means number of shift, man hours means number of hours. Right? It is very easy when you consider with man shift, number is 10 to the power 5, means per lakh man shift. When you talk about man hours, then it is number 10 to the power 6, that is 1 million man hours. Right? So man shift comes with 1 lakh, man hours comes with 10 lakh or 1 million. Right? If accident prone, then money is accident prone. If severity index, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन, अगेन एम्पिरिकली ड्रिवन है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं. ये नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस होली नंबर 12. अगर 12 से कम है तो एक्सीडेंट प्रोन नहीं होगा. इफ तो एक्सीडेंट प्रोन होगा. क्लियर? So this is the question which have been asked in DGMS exam. Severity index can be calculated as. Okay, so give the answer. Right, answer is A. Of course, answer is A. Of course, answer is A. And most of you people have answered it correctly. बहुत आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो होता ही नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ बार बार. डीजीएमएस का अगर आप 150 क्वेश्चन की बात करें ना, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट, ओनली 5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट. ओके, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड आई हैव रिटन. आप एक बार पढ़ लो दोनों का फुल फॉर्म. SAPICOM is survey of accident prone mines and identification of corrective measures, and SOMA is survey of mine accident. Just दो वर्ड है. I have written the full form. Okay, not much important, but फिर भी मैं इसलिए लिख दिया हूं कि अगर पूछा गया तो आप डायरेक्टली बना सकते हो. Okay, so we come to the next topic. It is dealing with accident and emergencies in mind. These are very easy topics. जो भी हम आज पढ़ रहे हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है. Screen one more. Okay, right. So SAPICOM and SOMA, you can write the formula. Of course, I shall share the PDF also for today's free class. I'll share everywhere. Of course, from tomorrow we shall share only in the fast track group, not everywhere. Okay, so dealing with accidents and emergencies in mind. Just I give you 1 minute. First of all, you read what is written there. Here, I guess you have already read these lines. So an emergency is an, see, I have bold it, urgent, unexpected, usually dangerous. इमरजेंसी, कभी भी किसी को इमरजेंसी आ जाती है ना, प्रॉब्लम फंसा हुआ उसने कभी, राइट. सो इट इज एन अर्जेंट, अनएक्सपेक्टेड, एकाएक आ जाता है, एंड यूजुअली डेंजरस. मैं आपको बताया कि जनरली जब भी इमरजेंसी आती है तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं. दैट पोजेस एन इमीडिएट रिस्क टू हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट. तो इमरजेंसी किसी भी तरह का हो सकता है. हेल्थ की इमरजेंसी हो सकती है, किसी को प्रॉब्लम हो गई, नॉर्मली जैसे क्या होता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो एक इमरजेंसी हो जाती है. लाइफ, अगर आप मान लो किसी प्रॉब्लम में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया. प्रॉपर्टी, मान लो कि अर्थक्वेक आ गया. इन्वायरमेंट, जैसे आज के डेट में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही है, या
इस तरह की बहुत ही कॉमन चीज है ये, ठीक है। दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन, ऑफ कोर्स इमरजेंसी है तो यू विल हैव टू एक्ट प्रॉम्प्टली, बहुत जल्दी आपको एक्ट करना पड़ेगा। और आपका जो रिस्पॉन्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिस्पॉन्स टू एन इमरजेंसी कैन बी द डिफरेंस बिटवीन लाइफ और डेथ। अगर आपने अगर आपने तुरंत प्रोएक्टिव एक्ट किया तो हो सकता है कि किसी की जान बच जाए, अगर आपने एक्ट नहीं किया हो सकता है किसी की जान चली जाए। टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी, ऑफ कोर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रिकवरी। सो द रिस्पॉन्स इन इमरजेंसी सिचुएशन, quick response, proactive response in emergency situation is very much required. Okay, for that emergency response plans are prepared. These are the keywords which I have written there. Consider the key risk, sharing your plans, develop an emergency plan, emergency procedures, have clear emergency roles and responsibilities. Then of course you must have plans to evacuate people. So stop, that is predetermined set of action when unexpected happen. इस वर्ड का मुझे लगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है, तो मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है प्रीडिटरमिन्ड सेट ऑफ एक्शन व्हेन अनएक्सपेक्टेड हैपेंस। मतलब अगर आप डिसाइड करके रखते हैं कि अगर कल को ऐसा कुछ हो गया ना तो मुझे इसी तरीके से काम करना, सो दैट इज कॉल्ड सो स्टॉप। ओके, सो दोज आर द प्रीडिटरमिन्ड सेट ऑफ एक्शन when something unexpected happens, and then after the incident what are the steps you have to take. So all those things are included in the emergency response plan. Means when there is some kind of emergency are the unexpected situation which may arise. So in those emergency situation, how you have to act, what you have to do, all those things are included in emergency response plan. Okay, so this is a diagram regarding emergency response plan. The same thing which I have told you there is written here, that prepare emergency response plan and team, prevent fatalities and inquiries, reduce damage to building, stock, equipment, life, everything, protect the environment and the community. So all those things which I have already told you is written here. आपको दोबारा पढ़ने की वैसे जरूरत है नहीं, बट आप देख सकते हैं कि जो मैंने बताया उसको याद करने की, देखो रटने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रटने की जरूरत है। प्रीवियस स्लाइड अगेन प्लीज। ओके, सी आई विल शेयर दिस पीडीएफ, आई एम पासिंग दिस स्लाइड्स फास्ट, या जल्दी कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये स्लाइड मैं आपको दूंगा और उसमें से आपको बस पढ़ना ही है। ये ज्यादा नोट्स बनाने की आप कोशिश मत करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कैसे पढ़ाना चाहता हूं, इसको समझिए आप, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा एग्जाम में, बिकॉज मैं आपको पॉइंट नहीं बताना चाह रहा कि आप ये याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी। आपके अंदर अगर एक बार थिंकिंग एबिलिटी आ गई ना तो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में माइंड्स एक्ट, माइंड्स रूल है, कुछ भी पढ़ना चाहो ना तो आप बहुत आराम से पढ़ लोगे। आदमी के पास किसी भी कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ह्यूमन ब्रेन आपको पता है कितना स्ट्रांग है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। ये सब कंटेंट क्या है आप 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऑलराइट, so this is a question which have been asked in DGMS. Identify 2 basic objectives of developing emergency plan in a mind. See, ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे अटपटा सा लगा क्योंकि 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो 2 ऑप्शन में 3-3 दे रहे हैं, बट एनीवेज the question have been asked by DGMS, answer has been provided. Okay, so read the question and answer it. 2 basic objectives of developing emergency plan in a mind. Emergency situation lead to chaos, difficult to access the situation, prompt action required to prevent casualties, to prevent reoccurrence of accident. सिर्फ 2 ही बताना है। Okay, answer is C, 1 and 3. देखो इस तरह क्वेश्चंस करना, ये थोड़ा सा देखो बहुत ही रैंडम अलग तरीके का क्वेश्चन था, तो मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाता है, मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया है। बट एनीवेज देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ आपको। ये 3 ऑप्शन में ना 1 इज वेरी कॉमन, 1 1 1, आपने इसको तो पहले ही छाड़ देना है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और अगर ये आंसर होगा तो भाई फिर तो अलग ही कहानी है। ओके, दे आर आस्किंग 2 basic objectives, so how can answer be these? ये तो हो ही नहीं सकता। they are asking only 2 and giving 3, so ये तो होना ही नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर ए बी 3 है। ए में भी 1 1 1 इज कॉमन, आपको पता है कि एक तो इसमें कॉमन ही है। सो बेसिकली यू हैव टू चूज बिटवीन 2 4
एंड 3। आप 2 and 4 and 3 को पढ़ो, जो सबसे एप्ट लगे उसका जवाब दो, जो सबसे एप्रोप्रिएट लगे उसको आप मान लो। इमरजेंसी सिचुएशन लीड टू केओस, ये तो है ही है। डिफिकल्ट टू एसेस द कंडीशन, प्रॉम्प्ट एक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कैजुअलिटीज, टू प्रिवेंट रीएक्सलेंस ऑफ एक्सीडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी इस तीन लाइन में ना एक लाइन को चूज करो, तो मोस्टली लोग ना यही 3 को चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, वर्ड देखो, प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, प्रिवेंट कैजुअलिटीज लिखा हुआ है। ओके, सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड, 1 and 3। थोड़ा सा पोरली फ्रेम क्वेश्चन है, बट एनीवेज डीजीएमएस ने पूछा है, हमें क्या करना है। ऑलराइट, there's a next question. Key personnel at the time of emergency includes all rescue trained person, attendance clerk, all heads of department, canteen manager, all the options. मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता दिया है कि all of the options अगर होना, if you get an option of all of these, 10 क्वेश्चन अगर आप टिप करोगे तो आपको डेफिनेटली पता है कम से कम 8 नंबर आएंगे, राइट? So this is very important trick. Answer is E, and of course you most of you people have answered E, so E is the answer. All right, again this is the next question. Preparation and implementation of emergency plan was made mandatory in CMR and MMR after 1985 amendment, after 1983 amendment, after 1958 amendment, after 1989 amendment, none of the options. वैसे तो देखो ये legislation का पार्ट है, legislation के आपके CMR MMR में लिखा हुआ है, but चूंकि related था, that is why I have put the question here. Okay, as such this is directly written in CMR and MMR. CMR में, इस साल के CMR में, शायद 2017 के CMR में नहीं है, but this was written in CMR of 1957. And DGMS asked question. Okay, answer is A. Please, question number 11. Okay, I'll repeat. So first understand this question, that answer is A after 1985 amendment. Right? Okay, I am just repeating the question number 11 again. Key personnel at the time of emergency includes all rescue trained person, attendance clerk, all head of department, canteen manager, all the options. So E is the answer. These are all very key important persons.